Okay, so let's begin now. So we want to see today ahead of the potential energy. तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला था. क्या था उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? It was 13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये पॉजिटिव में है, करेक्ट ना? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी वाज इक्वल टू -2 into 13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट? ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. एंड देन नाउ टोटल एनर्जी क्या होगा? फिर आसान है. टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस potential energy. Total energy is equal to what? Kinetic energy plus potential energy. ठीक है. Now it's very easy. ये kinetic energy क्या है? 13.6 पॉजिटिव में है और ये potential energy क्या है? नेगेटिव में. Twice of 13.6 मतलब I can even write what? Potential energy is equal to -2ke. करेक्ट ना? ये पूरा सेक्शन यहाँ का देख रहे हो क्या है? तो kinetic energy. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूं मैं. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, which is nothing but negative of kinetic energy. So total energy ultimately comes out to how much? Minus 13.6 into z square by n square electron volt. Okay, got my point. Okay, so minus 13.6 z square by n square electron volt. Okay, तो ये हो गया अपना टोटल एनर्जी का फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ तक हम लोग ऑलमोस्ट आ गए थे. ओके, तो आज क्या देखना है बच्चों? हमको आज हमको देखना है कि टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं. उसके बाद हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे. एंड देन वी मूव ऑन टू योर विबग्योर. राइट, दैट पार्ट विल सी एंड देन we'll begin with mostly with the quantum theory. What my point? So who had given all these theorems? All these theorems were given by Bohr, right? Niels Bohr. What was his name? Niels Bohr. You see now? Just show you something. Just a minute, okay? I'll share it. Basically, what was Niels Bohr? He was a physicist. Correct. Right. So many things he gave. We'll just try to understand what kind of personality he was.
Okay, I'll show you one video. Just a minute. And human contributions to understanding. This language. Okay. Is visible to you? To Christian Yes, Bohr sir. and Ellen Adler Bohr. His father was a physiology professor, and his mother was a daughter of a wealthy Danish Jewish family. Niels was the second child of his parents. He had an elder sister, Jenny, and a younger brother, Harald. Niels was homeschooled until he was age 7. After then, he began his formal schooling at the Gammelehome Latin School. The school was both an elementary and high school and observed strict discipline. The school expected its students to be disciplined and work hard. Niels' father, who was so passionate about his children's education, would bring home some of his fellow professors from the University of Copenhagen and allow his children to listen to their conversations, which encompassed arts, philosophy, and science. In 1903, age 17, Niels attended the Copenhagen University, where he studied mathematics, chemistry, astronomy, but he majored in physics under the tutelage of Professor Christian Christiansen. While Niels was working towards his degree in 1905, the Royal Danish Academy of Sciences announced to award the best research paper on methods for measuring the surface tension of liquids with a gold medal. Though this prize was meant for experienced scientists, Niels, still an undergraduate, decided to participate in the competition. He was ambitious because of his growing strength and passion for physics. He was allowed to use his father's physiology laboratory for his experiments, and several months, Niels worked tirelessly and obsessively, especially during the night. His father, worried about his son's growing obsession with the experiments, ordered him to stop and focus on his research. Niels left for his maternal grandparents' estate to continue his experiment. He eventually completed the research and submitted it in late 1906. His research was sufficiently brilliant, an incredible achievement for an undergraduate. Niels then received his BS degree in 1907. In 1909, Niels earned his MSc degree in physics. He also went further to complete his PhD in physics in 1911, both from the University of Copenhagen. His doctoral dissertation was on the electron theory of metals. In 1911, Niels was opportune to be among the few chosen to work in J.J. Thomson's Cavendish Laboratory at the University of Cambridge in England. Niels arrived at the laboratory in October 1911. However, the 26-year-old Niels had a very bad start with Thomson. The first thing Niels said to Thomson was, "This is wrong," pointing to a page in a book written by Thomson. Niels also found it very hard to get along at the Cavendish Laboratory. Niels conducted some research on cathode rays, but the research did not appeal to Thomson. Towards the end of 1911, Niels met another great physicist, Ernest Rutherford, whose lab was located at the University of Manchester. He asked if he could be transferred to Rutherford's lab to work with him. Rutherford agreed, but told him to seek Thomson's approval first. The following year, Niels moved to Manchester to work with Rutherford and conduct his postdoctoral research on the atomic structures. Niels soon became so interested in Rutherford's model of the atom, which claimed that the atom was made of tiny, very dense positively charged nucleus surrounded by negatively charged electrons.
and most especially in the behavior of electrons, which was the subject of his doctorate thesis. Niels and Rutherford eventually became great friends. Niels was not only inspired greatly by Rutherford and his work, but both of them together with their wives spent happy vacations together. In the fall of 1912, Niels returned to Denmark with two foremost ideas. First, to better understand the behavior of electrons in the atom, and secondly, to pattern his behavior as a physicist after Rutherford's. Niels married Margaret Nordlund on August 1st, 1912. Margaret was a sister to the mathematician Niels Erik Nordlund. The couple had 6 sons, but unfortunately, 2 of them died and only 4 survived to adulthood. Only his son, H. Bohr, emulated him and won a Nobel Prize in physics. In 1913, Niels published a paper on atomic structure. The paper formed the foundation for the famous old quantum theory. Between 1914 and 1916, Niels was a lecturer of physics at the Victoria University of Manchester, UK. In 1916, Niels was made a professor of theoretical physics at the University of Copenhagen. He held this post for 46 years. In 1920, Niels founded the Institute of Theoretical Physics at the University of Copenhagen and served as the administrator of the institute for the rest of his life. Niels was awarded the 1922 Nobel Prize in Physics for his research works on atomic structures. He came up with more revolutionary theories. For instance, he collaborated with Werner Heisenberg and other scientists on the new quantum mechanics principle, which was in connection with his concept of complementarity. The concept of complementarity stated that physical properties on an atomic level would be viewed differently depending on experimental parameters. This concept explained why light could be considered as either a wave or a particle, but not both at the same time. During World War II and the reign of Adolf Hitler, Niels was able to provide shelter to the German Jewish physicists at his institute in Copenhagen, which caused many of the physicists to travel to the US. However, when Denmark became occupied by Nazi forces, Niels and his family moved from Denmark to Sweden, but Niels and his son, Age, eventually fled to the United States. In the US, he worked on the Manhattan Project in Los Alamos, New Mexico, where the first nuclear bomb was built. He collaborated with a group of scientists to handle the research on nuclear fission during the late 1930s. He actively contributed to the liquid droplet theory. Due to Niels' concern about how the nuclear bomb could be very destructive, he called for active communication about using the nuclear weapon between nations and future international arms control. This idea was resisted by both Franklin D. Roosevelt and Winston Churchill. Niels suffered a stroke and eventually died in 1962 at age 77. He died of sudden heart failure at his home in Carlsberg, Copenhagen, Denmark. Niels' body was cremated and his ashes were buried in the family plot in Assistens Cemetery in the Nørrebro sections of Copenhagen. Thank you. Okay. So little bit of the idea of personality who gave this theory, correct? Okay. That's how he worked with Rutherford, and then what he did, उसको ही उसके थियरी का उसने बैंड बजा दिया. किसने बजाया? बोर्स ने. He went into his lab and then he only eliminated his theory. Correct. This is the world is like this. Correct, na? Okay. Yeah. ठीक है. Just like you see, these kings in the previous, what they used to do, and they will put their own father in the jail. और जैसे इसको किया था, क्या वो मुगल king, what was his name? Aurangzeb and all, they killed their own father. Killed him, whatever, they put in jail. I don't remember the exact history. But yeah. ठीक है.
but good. So total energy is what? Total energy is negative in any shell. So negativity we are getting. So what I can say is that total energy is equal to negative in any. किसी भी शेल में क्या है? नेगेटिव रहेगा. Why negative? Energy is never negative. Energy is never negative. Then why is it negative? Yes, who would like to tell? Energy is never negative. Why is it negative? कौन बोलेगा? Anything you can tell, whatever you think. Why is total energy negative? एनर्जी का नेगेटिव वाला कुछ रिलेशन नहीं है ना. नेगेटिव क्यों लिखा है यहाँ पर? किसका टोटल एनर्जी? इलेक्ट्रॉन का. जो इलेक्ट्रॉन अभी घूम रहा है शेल में, इसकी एनर्जी के बारे में बात चल रही है. इलेक्ट्रॉन जो है इसका टोटल एनर्जी इतना है नेगेटिव. No, no, that is okay. Potential energy is negative, but negative का meaning क्या हो रहा है यहाँ पर? Potential energy is negative, that I can understand. But what I am able to derive from this negativity? बोलो. Anyone? ठीक है, होमवर्क देता हूँ मैं आपको. ढूंढ के निकालो इसको क्यों है नेगेटिव. ओके, और अगली बार बताना मुझे. अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल ऑफ एटम. ओके, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल ऑफ एटम. मतलब किसी भी शेल में हो उसका टोटल एनर्जी कितना होगा वो हमको देखना है. ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? किसी को कुछ डाउट है या आप तो कुछ समझ में नहीं आया किसी को? ऐसा कोई है? यू कैन टेल क्लियरली. ओके, ठीक है. मैं आपको कुछ खाने नहीं वाला हूँ, आपने पूछा तो, है कि नहीं? Yes or no? So what I was telling is that total energy of electron in n shell of hydrogen atom. So what is formula of total energy? Total energy is equal to minus 13.6 into z square upon n square electron volt. Correct. So if n is equal to 1, what will happen? Total energy is equal to, अब z तो 1 ही रहेगा ना. z, why z is 1? Because hydrogen atom is इस्तेमाल करेंगे. Hydrogen means z is 1. Correct. Now if n is 1, then what I am getting is something like this, minus 13.6 electron volt. Correct. If n is 2, z तो 1 ही रहेगा हमेशा. टोटल एनर्जी कितना आएगा? टोटल एनर्जी को माइनस 13.6 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, कुछ तो वैल्यू आएगा इसका. If n is 3, then total energy is equal to minus 13.6 divided by 3 square. Some value will come. And if n is 4, total energy is equal to minus 13.6 upon 4 square. Some value will come. Correct, no?
राइट? तो कैन यू टेल व्हाट इज वैल्यू से कम? 13.6 डिवाइड बाय 4 कितना आता है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 डिवाइड बाय 9 कितना आएगा? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 डिवाइड बाय 16 इज हाउ मच? -0.85। ओह सॉरी, ठीक है, मैं वही पिछला वाला लिख रहा था तब तक। ओके, पिछला वाला ही अपना चल रहा था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। ओके, सो दिस वी आर गेटिंग। यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? व्हाट यू आर एबल टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस इज दैट जैसे ही शेल का अमाउंट बढ़ रहा है, टोटल एनर्जी क्या बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कौन बताएगा? टोटल एनर्जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Now suppose what I do is, now let's draw an atom. Okay. ये कितने हो गए शेल? 3 शेल हो गए। मेरा आवाज आ रहा है कि बच्चों? हेलो हेलो, am I audible to you? बच्चों हेलो, ओके, सो गए सब लोग? हेलो हेलो हेलो, am I audible? Yes, sir. ओके, तो ये एटम जो आप देख रहे हो ना, अब ये सर्कल ही है सारे, जैसे आपको अभी कभी कभी ओवल बन जाते करते करते, लेकिन ऑल आर सर्कुलर होंगे। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है? थोड़ा हमको और बड़ा लगेगा बच्चों ये। इसमें अपना काम होने नहीं वाला है, समझ में आ रहा है आपको? अपना काम नहीं होगा इसमें, थोड़ा और बड़ा लगेगा हमको। ठीक है? थोड़ा और बड़ा बना देते सर्कल में। ठीक है,
ओके, मान लो ये आपका क्या है, एटम है, ठीक है, ये क्या है आपका एटम है बच्चों, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, ठीक है। तो पहला जो शेल दिख रहा है, कितने 4 शेल है, हमने कितने किए 1 2 3 4। फर्स्ट शेल के लिए कितना आ रहा है मेरा एनर्जी, आई एम गेटिंग फॉर फर्स्ट शेल माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड शेल के लिए कितना आ रहा है माइनस 3.4। थर्ड के लिए कितना आ रहा है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ के लिए कितना आ रहा है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं, समझ में आ रही मेरी बात। तो एज यू आर गोइंग आउट ऑफ द शेल व्हाट इज हैपनिंग, एनर्जी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बताओ। जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, यस नायर देवी टेल व्हाट इज हैपनिंग, एनर्जी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एज यू गो आउट, बोलो। मीक्षा हो क्या, मीक्षा इतना जल्दी क्यों आए तुम लेक्चर के लिए, थोड़ी देर और रुक जाए। मैं बाहर गया था, अभी आया। ओके ओके ओके, ठीक है। इसका आंसर बताओ, एनर्जी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बाहर जैसे जा रहे हैं। अरे कुछ तो बताओ। जैसे आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, ये 13.6 से माइनस 13.6 से माइनस 0.85 तक जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ये। So as you are going outside, what is happening is that energy of electron is increasing, क्योंकि माइनस 13.6 है और माइनस 0.85 है। माइनस 0.85 माइनस 13.6 में से कौन बड़ा है, माइनस 13.6 छोटा है, माइनस 0.85 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव साइन है बच्चों। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases outside, as you go outside energy will increase, and this one you are able to see minus 13.6 electron volt. This is what, this is minimum energy, this is minimum energy, okay, understanding। और इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, ask कि when will electron have maximum energy, when will electron have maximum energy, yes, in the valence shell. What would be the value of energy then? Okay, very good, correct, you are telling correct, in the valence shell, but what will be the value, मान लो n से भी ज्यादा शेल है, इनफाइनाइट शेल लगा दिए, क्या होगा वैल्यू, इनफाइनाइट शेल यदि मैंने लगा दिए, सपोज n tends to infinity, what will be the value now, n is tending to infinity, क्या होगा वैल्यू, बोलो, इधर डाल दो ना इंफिनिटी, यहाँ पर इंफिनिटी डाल दो, क्या आ रहा है, टोटल एनर्जी कम्स आउट टू हाउ मच, 0, करेक्ट, टोटल एनर्जी 0। So when electron goes to infinity, what will happen, total energy will be equal to 0, correct, right, total energy is 0, मतलब क्या हो गया है, this condition is when electron is free from nuclear attraction, electron is free from
nucleus, correct? That is, ionization has occurred. हमने देखा था periodic table में ionization energy required to remove an electron from outermost shell. मतलब क्या हो गया? Ionization has occurred, correct? Okay, got it. लिख लो इसको फटाफट. Understood, na? This is what we have to do. लिख लो इसको फटाफट.
हो गया लिख के सबका? Done writing? Okay. Now, this is the next point. Okay. Electron can accept energy. Electron can accept energy and can lose energy. Okay. Electron can accept as well as electron can lose energy, right? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यदि एनर्जी ले लेता है, मतलब इफ इट एक्सेप्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होता है, इट विल टेक एनर्जी एंड इट विल जंप. जैसे पीयूष यशवंती ने कुछ खा लिया तो कूदी मारने लगता है वो, है कि नहीं? उसमें बहुत ये आ जाता है, एनर्जी हो जाता है, लेकिन खाने को नहीं मिला तो सो जाता है वो. बराबर ना? पीयूष पढ़ाई नहीं करता, खाने को मिला तो पढ़ाई करता है, खाने को नहीं मिला तो सो जाता है. बराबर ना? तो क्या होता है, इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट्स एनर्जी, व्हाट हैपेंस? इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट्स एनर्जी, it jumps to higher energy level, correct? Yeah. And this process called as what? Excitation of electron, correct? An electron gets excited. कुछ अच्छा खाने को मिला आपको तो आप क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है. एक्साइटेड नहीं लिखना था, एक्साइटेशन लिखना था. ठीक है, excitation of electrons, you know? And one more thing, that if electron loses energy, what happens? It goes back to lower energy level. That is called as what? Okay. De-excitation of electron. एक होता है एक्साइटेड होना और एक होता है क्या, डी एक्साइटेड होना. ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? एक होता है एक्साइटेड, एक होता है डी एक्साइटेड. ओके, so when it gets excited it will jump, when it gets de-excited it will not jump. ठीक है, getting a point? So now what we will do is that, जैसे हायर एनर्जी लेवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एनर्जी. देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इट जंप्स फ्रॉम टू हायर एनर्जी लेवल. हायर एनर्जी कौन सा, ये वाला. तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा वो, if some electron is there here, if it accepts energy it will go to this energy level, or this
कोई तो एक एनर्जी लेवल पे जाएगा. And electron is here, and if it loses energy, it will again go back. Accept energy, it will come here. Rejects energy, again come back. Somewhere कहीं भी जा सकता है. मैं just example दे रहा हूँ आपको. Can come back here also, here also, here also. Anywhere it can go here, here, here as well. Correct. So that's the meaning of that. So electron gains or loses only those energy which are equal to difference in two energy. मतलब कितना energy, कितना भी energy नहीं देगा वो. समझ में आ रही बात? It would lose and gain only that much energy which is equal to difference in two energy. मतलब ये शेल और ये शेल के बीच का डिफरेंस है, मतलब 13.6 माइनस 3.4, इतना ही एनर्जी वो लूज करेगा. नहीं तो 3.4 और 1.51, 3.4 माइनस 1.51, इतना ही एनर्जी लूज करेगा वो. करेक्ट. कोई भी एनर्जी लूज करने वाला नहीं है. So what I can write here is that, see very carefully, an electron, what it does is that an electron gains or loses, correct, gains or loses only those energies, only those energy which are equal to or difference in two energy levels, equal to or difference in two energy levels, है ना. That means what? डेल्टा E जो लिख रहे हैं हम लोग, क्या होना चाहिए वो? equal to E2 minus E1, correct? But delta E should be like E3 minus E1, कुछ भी दो एनर्जी लेवल के बीच में कुछ भी डिफरेंस होना चाहिए. That two energy will only lose or gain, correct? Not more than that. You understood now? Any doubt till here? Anyone has? Not the issue with doubt. Okay, now let's move ahead to see our next topic, that is your atomic spectrum. अगले टॉपिक में जाते हैं, atomic spectrum, correct? So what happens here now? That we'll see. Okay. सबसे पहले हम लोग ये फिर से एक एनर्जी लेवल ड्रॉ कर देंगे. एटम को निकालने के लिए. ठीक है, फिर से एक एटम को निकाल लिया. आइसक्रीम नहीं है, एटम है. ठीक है, और सब में इलेक्ट्रॉन है. क्या करेगा? एक्साइट होगा तो हायर, डी एक्साइट होगा तो लोअर. नाउ व्हाट हैपेंस दैट इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो हमेशा क्या करना चाहता है? इट ऑलवेज वांट्स टू रिमेन इन द लोअर एनर्जी लेवल. लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा है? ये वाला है. हमेशा इधर रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए. करेक्ट. सो क्या होता है, एनर्जी मिल भी गया तो क्या करना चाहता है? वो फिर से बाहर वापस आना है. हायर एनर्जी लेवल से यहाँ पर आ गया, फिर से क्या वापस जाना चाहता है, क्योंकि पॉजिटिविटी है ना, पॉजिटिविटी के पास जाना चाहता है फिर से. करेक्ट. राइट. सो व्हाट आई कैन infer from this point is that electron, what it want to do is, electron always tries to remain in lowest energy level. Therefore it returns back. Therefore it returns back. Correct. That is, it means that energy is emitted. कुछ एनर्जी उसने लिया था इसलिए एक्साइट हो गया, आगे गया था, लेकिन अब क्या हो रहा है? एनर्जी एमिट हो रहा है, इसलिए वो फिर से जा रहा है. करेक्ट. और ये एनर्जी जो एमिट हुआ है वो किस फॉर्म में है? इस एनर्जी विच हैज बीन एमिटेड. करेक्ट. In which form is this energy? कौन सा फॉर्म धारण करके आता है एनर्जी? एनर्जी comes out in the form of electromagnetic waves. कैसे बाहर आ गया एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में. करेक्ट. जस्ट लाइक
in form of some radiations, correct? Wavelength और light. तो ऐसे फॉर्म्स में ये एनर्जी बाहर निकल सकते हैं, करेक्ट? तो ये वाला आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल है, ये वाला, लेकिन उसके आगे के फिर बढ़ते जाते हैं. Okay. So what lesson we derive from this is that only fixed amount of energy is emitted and absorbed. You can write down that. क्या? Only a fixed amount of energies are emitted and absorbed. Okay. Fixed amount of energies are emitted and absorbed. ठीक है, लिख लो इसको फटाफट. हो गया, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं. Okay, so I told that atomic structure means that what is happening is that we saw that कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर तो जाएगा, हायर शेल्स में तो जाएगा, लेकिन एनर्जी जब एमिट करेगा बाहर, करेक्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन अगेन कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, व्हाट विल हैपन इज दैट फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा. तो एनर्जी कुछ एमिट करेगा ना, एनर्जी लेके ऊपर गया था, क्या करेगा जब नीचे आ रहा है तो क्या एनर्जी एमिट कर रहा है. तो किस फॉर्म में एनर्जी बाहर एमिट कर रहे हैं, यहाँ बताया गया कि एनर्जी इज एमिट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ, लाइट, करेक्ट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर एमिट होते हैं, तो वो एनर्जी का कुछ फॉर्म है, दैट इज नथिंग बट योर रेडिएशंस, ओके, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इट्स गिवन आउट. ओके, अंडरस्टूड. और वो क्या होता है कि कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया या लिया नहीं जाता, ओनली फिक्स्ड अमाउंट इज गिवन और टेकन, ओनली फिक्स्ड अमाउंट इज गिवन और टेकन. ओके, लाइक दैट. Understood point. Yes, sir. लिख लो इसको.
Okay. But I was just taking one parcel which you had to come on the door. So I had to go for that. Sorry for that. Okay, so we'll move ahead now. So we saw that how atomic structure was there. And now you see what is happening is that let's find out now how much energy should be given out, how much energy should be taken in. You know. So if I say that okay, an electron hydrogen atom jumps from where? Jumps from n is equal to 2 to n is equal to 1. क्या निकालना है आपको? Find energy and wavelength. Find energy and wavelength of emitted radiation. करेक्ट. तो क्या निकालना है हमको? डेल्टा ई निकालना है. डेल्टा ई क्या है? E2 माइनस E1 दिख रहा है हमको, है ना? E2 माइनस E1 निकालना है. कैसे करेंगे? देखो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है? ये है n इज इक्वल टू 1 और ये है n इज इक्वल टू 2. तो इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम हियर टू हियर. करेक्ट. जम्प्स फ्रॉम अच्छा n इज इक्वल टू 2 से 1, मतलब यहाँ से नीचे आ रहा है, वो 2 से 1 में आ रहा है. दैट मीन्स ही विल एमिट सम एनर्जी. करेक्ट. सो डेल्टा E इज इक्वल टू व्हाट? E2 माइनस E1. और E का फॉर्मूला क्या है? E मीन्स टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी मीन्स व्हाट? 13.6 into Z is equal to 1. हाइड्रोजन एटम मतलब Z is equal to 1. Z square upon N square minus of minus 13.6 into Z square upon N square. तो डेल्टा E कितना गया है? डेल्टा E कितना आएगा फिर? ये देखो यहाँ से Z कितना है? Z is equal to 1 only. Okay. Delta E is equal to minus 13.6 into 1 by 2 square plus 13.6 into 1 by 1 square. Okay. तो कितना आया ये? 13.6 माइनस 13.6 by 4 कितना होता है ये? 13.6 by 4 मतलब कितना? 2 वाले का एनर्जी लेवल कितना था? ठीक है, 2 का एनर्जी लेवल कितना है? 3.4 आएगा यहाँ पे. क्या लेगा? माइनस ऑफ 3.4 which comes out to be 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतना एनर्जी बाहर दिया गया. क्या बोला उसने? फाइंड एनर्जी. एनर्जी तो निकाल लिया हमने, वेवलेंथ भी निकालना है. वेवलेंथ कैसे निकालें? वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला E इज इक्वल टू hc by lambda. राइट. E क्या है? E is energy of a wave. Okay. And then h is what? H is your Planck's constant. Lambda is what? Lambda is wavelength. And c is velocity of light. Okay. So now I already know what? (10.2) is equal to hc by lambda. Correct. तो 10/2 कितना है? h कितना है? h का वैल्यू कितना? Planck's constant value is fixed always. How much it is? 6.636 into 10 to the power minus 34 joule second. This value is always fixed. Into c means velocity of light. कितना आता है? 3 into 10 to the power 8 meters per second divided by lambda is how much? Lambda तो निकालना है हमको. Lambda comes out to be, you solve this, 10.2 नीचे आएगा ना. So if you solve this, what you get is 12375 upon 10.2 come to be Armstrong.
Armstrong means you know ना, -10, correct. ठीक है, फाइनल आंसर यू गेट इज, इसको सॉल्व कर लेना करके आप. ओके, लैम्डा कम्स आउट टू बी दिस मच एंगस्ट्रॉम. कर लेना इसको सॉल्व. 1237375 divided by 10.2, like that will be your answer. ओके, अब इसी को क्या करना है, हमको जनरलाइज करना है. ठीक है, ये तो हमने कर दिया कैलकुलेशन. बट इफ दिस कम्स फ्रॉम डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, इसका यदि जनरल फॉर्मूला करना है मुझे, या फिर E2 माइनस E1 करने की वजह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1, मतलब N कौन सा भी, कौन से भी दो शेल के बीच का. तो डेल्टा ई क्या आ गया, डेल्टा ई इज नथिंग बट HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू EN2 कितना आया, EN2 इज -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाय इंटू स्क्वायर, माइनस ऑफ कितना है, -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर. ओके, तो क्या है, HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 कॉमन निकाल लो, 13.6 Z स्क्वायर इंटू क्या आएगा ये, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंटू स्क्वायर. ओके, अब क्या होगा यहाँ पर देखो, नाउ व्हाट आई विल डू, ऊपर नीचे HC बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, मतलब नॉट HC बट ओनली बाय HC. ठीक है, तो क्या करूंगा यहाँ पर मैं, हियर आई मल्टीप्लाई ऑन टॉप इज इक्वल टू HC अपॉन HC. तो ये और ये चला गया. ठीक, तो क्या आ गया मुझे, 1 बाय लैम्डा आ गया. सो ahead when I go, what I will get is 1 by lambda is equal to क्या आता है मुझे, 13.6 Z स्क्वायर बाय HC इंटू क्या है, 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंटू का स्क्वायर. ठीक है, got it. Now this value 13.6 by HC, it has some significance, correct. 13.6 by HC is called as nothing but the Rydberg's constant, whose value is R, correct. So R is equal to Rydberg's constant. R कितना आता है, 1 point into power -7 per meter. Okay, 1.09 10 to the power -7 per meter ये आता है. So if I write for 1 by lambda, well, what I get, 1 by lambda is equal to how much, R into Z square into 1 upon N1 square and 1 by N2 square, correct. Okay, so this is the final value we get. लैम्डा निकालने के लिए डायरेक्ट वैल्यू डाल दोगे तो सबका वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, इससे आपको वेवलेंथ मिल जाता है. अंडरस्टूड माय पॉइंट. देख लो इसको फटाफट.
हो गया लिख के? Where is energy of spectrum? Energy of wave किधर है? ये वाला देखो, हमको सिंपल ये फॉर्मूला था, डेल्टा इज इक्वल टू यू टू माइनस वन, है ना? तो यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया था कि दो एनर्जी लेवल के बीच का हमको एनर्जी निकालना है, करेक्ट, डिफरेंस बिटवीन दो एनर्जी। तो डेल्टा ई तो निकल गया, दोनों के बीच का एनर्जी लेवल तो पता चल गया हमको, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसने कितना एनर्जी लूज किया? E2 माइनस E1, इतना एनर्जी लूज किया। E2 माइनस E1 क्या निकला हमको? फॉर्मूला में डाल के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी बाहर आया उसका। ओके, तो क्या हुआ देखो यहाँ पे, टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकला, ये हो गया। लेकिन हमको ई नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ई तो पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो वेवलेंथ के लिए क्या है ना, मैक्स प्लैंक हियर गिवन दिस फॉर्मूला, E is equal to hc by lambda। ये बहुत बड़ा फिजिक्स में भी देखोगे इस फॉर्मूला। दिस इज एनर्जी ऑफ द वेव, मतलब जो वेव निकल, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इलेक्ट्रॉन which has come out, it has come out in the form of a wave, करेक्ट ना? जैसे हमने यहाँ पर देखा, एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, करेक्ट? और वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो वेव है तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा। तो वेवलेंथ कैसे निकालें? E is equal to hc by lambda, ये फॉर्मूला है उसका, करेक्ट ना? वेवलेंथ वाला, ठीक है? तो 10.2 is equal to hc by lambda आ गया। So what I should do now? I know h value, I know E value already, I know C value, I take out lambda, करेक्ट? मुझे क्या मिला? जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था वेव के फॉर्म में, उसका मुझे क्या मिल गया? उसका मुझे मिल गया है वेवलेंथ, यहाँ पर मिल गया, ठीक है? ओके, और आगे मैंने क्या किया? इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश किया, मतलब जहां पर जैसे यहाँ पर E2 माइनस E1 था, तो यदि मेरे पास कोई भी एनर्जी लेवल होगा, यहाँ पर N1 और N2 को कुछ भी ले सकता हूँ मैं, N1 कैन बी शेल नंबर 1, N2 कैन बी शेल नंबर 4। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया? सबको एक स्टैंडर्डाइज इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया, और स्टैंडर्डाइज करते करते मुझे क्या चाहिए था? मुझे 13.6 बाय hc, जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट है, वो मुझे पता था, इसलिए मैंने क्या किया? यहाँ ऊपर नीचे hc से मल्टीप्लाई, ताकि मुझे 13.6 बाय hc मिल जाए, है ना? तो I got Rydberg's constant and then I got the value of 1 by lambda। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है? वेवलेंथ का डायरेक्ट वैल्यू मिल रहा है, जिसमें मुझे R का वैल्यू पता है, Z का वैल्यू पता है, N1 और N2 का वैल्यू पता है। बस कमी किस बात की? कमी वैल्यू डालने की बस बाकी है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, sir. Okay, now as we have seen this much, let's move ahead. And now what we will see is that this is nothing but your atomic spectrum. The electrons are jumping back. Okay. So calculate lambda. Calculate lambda when electron de-excites. From n is equal to 2, n is equal to 1. क्या करूंगा मैं यहाँ पर? मुझे फॉर्मूला पता है, 1 by lambda is equal to r into z square into 1 by n1। n1 क्या है यहाँ पर? 1 minus 1 by n2 का स्क्वायर।
क्या आ गया मुझे 1 by lambda is equal to r into 1 square into 1 minus 1 by 4. वन बाय लैम्डा कितना है ये 3/4 आ गया. Yes, h is equal to Planck's constant and c is equal to speed of light. Okay. तो बच्चों क्या आ रहा है देखो यहाँ पर मुझे इसको अभी उल्टा पुल्टा कर दूंगा मैं. क्या करूँगा लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 4/3r. ठीक है नहीं ये नहीं r नहीं आएगा 4/3r आएगा 1/r. And standardly I know value of 1/r. 1/r is equal to 911 एंगस्ट्रॉम. तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 1/r का. तो यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, याद कर लो इस वैल्यू को. लैम्डा कितना आता है 4/3 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम. मतलब कितना गया सॉल्व कर दो इसको आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम. ओके तो n is equal to 2 to n is equal to 1. ओके कहाँ से कहाँ गया n is equal to 2 n is equal to 1 आया. Suppose if I have this series, right, where I have drawn it like this, okay. So what you are able to see from here is that suppose this which is visible in front of you, these are number of cells. Like this is n is equal to 1, n is equal to 2n, n is equal to 3, n is equal to 4. Correct. n is equal to 5. ऐसा करते करते n is equal to infinity तक. हमको सारे नहीं देखने, कौन से देखना है हमको बस if it comes to n is equal to 2 n is equal to 1. Okay, n is equal to 2 so n is equal to 1. ये बाबा कौन 5 बार मैसेज भेज रहा है. क्या कर रहा है ठीक है. तो 3 से 1 आ सकता है, 4 से 1 आ सकता है, 5 से 1 आ सकता है. करेक्ट. और इंफिनिटी से आ सकता है. तो कुछ भी हो सकता है, इसे भी आ सकता है ना. तो क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज योर लाइमन सीरीज. दिस इज कॉल्ड एज योर लाइमन सीरीज. करेक्ट. एंड एज यू गो ऑन टॉप व्हाट हैपेंस इज दैट जैसे आप ऊपर जाओगे तो क्या होता है एनर्जी इंक्रीजेस as you go on top. How? Because this is what, this is minus 13.6 electron volt. This is how minus 3.4 electron volt. This is minus 1.51 electron volt. Correct. And finally E becomes 0 here. Okay. तो दिख रहा है आपको जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तो इसको क्या कहते हैं लाइमन सीरीज. And this which we calculated now. Okay. 1216. This is what? This is first line of Lyman series. First line of Lyman series. Lambda is there. Calculate what lambda is. First line of Lyman series.
So now you have to calculate from where? From n is equal to 3 to n is equal to 1. Okay. Right. N is equal to 4 to n is equal to 1. And ultimately n is equal to infinity to n is equal to 1. निकालो फटाफट. ये second line, ये third line, correct? 3 से 1, second line, third line, and this. n is equal to 5 to n is equal to fourth line और n infinity से 1. निकालो फटाफट क्या आएगा? निकालो फटाफट. हो गया क्या?
अरे हो गया क्या सबका या नहीं? बच्चों हो गया क्या नहीं अकाउंट? किसका है 1024? ठीक है, ऑलमोस्ट करेक्ट. यस, ऑलमोस्ट करेक्ट. शुड बी 1026 बट या करेक्ट ऑलमोस्ट. ये था 3221 का. 421 का है किसी का? अस्मित चौहान, चौहान. सर सॉल्व कर रहे हैं। ओके ठीक है, करो जल्दी जल्दी. अस्मित चौहान, अस्मित चौहान. पत्थर भी पिघल जाते, तुम लोग पिघलेंगे पिघलोगे नहीं. पत्थर को भी इतना बोल के पत्थर बोलने लगेगा. सॉल्विंग तो मुझे पता है, उधर बैठ के तुम क्या कर रहे हो मुझे कैसे पता चलेगा? सॉल्व कर रहे हो या टीवी देख रहे हो? है कि नहीं? हो गया? कुछ तो करो बाबा. इन्फिनिटी वाला क्या है? इन्फिनिटी वाला ठीक है, मैं ही बताता हूँ अभी. मीक शाह हुआ कि नहीं?
चंपक लाल हुआ कि नहीं? कैसे होगा तुम्हारा? देखो देखते हैं अभी n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या करना था? ये सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करो, 1 बाय लैम्डा, वेरी गुड, करेक्ट, इंटू इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर। करेक्ट ना? क्या लिखूंगे यहाँ पर? 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। 3 टू 1 है ना, तो n इज इक्वल टू 1 कितना है? n1 इज इक्वल टू 1, n2 कितना आ गया? 3 आ गया, है कि नहीं? वन बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, है ना? तो क्या है यहाँ पे? तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, क्या करेंगे अभी? कितना आता है? ये जेड तो 1 ही है, मतलब ये कितना है? 9 माइनस 1 कितना है? 8 बाय 9 आर। और क्या करोगे इसको? लैम्डा इज इक्वल टू 9 बाय 8 इंटू 1 बाय आर। 1 बाय आर का वैल्यू ऑलरेडी पता है 9 1 में, तो करो इसको, लैम्डा इज इक्वल टू 9 बाय 8 इंटू 9 1 में, मतलब लैम्डा कितना आता है? तो लैम्डा कम्स आउट टू हाउ मच? 1026 एंगस्ट्रॉम, समथिंग लाइक दिस, ओके? Yeah, very good. And then for this, n is equal to 4 to n is equal to क्या आएगा? 1 by lambda is equal to rz square into 1 upon 1 square minus 1 by 4 square, मतलब कितना है? 1 by lambda is equal to r into 15 by 16, okay? r is equal to क्या आया? सिक्सटीन बाई 15 इंटू 1 बाई लैम्डा, और इसका वैल्यू तो पता है आपको ऑलरेडी, इंटू कितना है? 911, मतलब क्या आएगा ये? फिर ये कितना आएगा? ये कैलकुलेट करो ये वैल्यू, ठीक है? ऑलमोस्ट ये 1000 के आसपास कुछ आएगा। Yeah, she is written that 9707 कैसा है तुम्हारा? Around somewhere around 971, somewhere around this, okay? Okay. और फाइनल कितना आएगा ये? 1 by lambda is equal to rj square into 1 by 1 square minus 1 by कितना है? 1 by lambda is equal to r ही आएगा ये, तो लैम्डा कितना है? 1 by r, this is for n is equal to infinity to n is equal to 1 की कितना है? 911, ठीक है? आगे सब अलग अलग वैल्यूज। ठीक है, अप्रोक्स टू दैट एकाधिक का वैल्यू आगे पीछे चलता है, नॉट अ प्रॉब्लम। एकाधिक वैल्यू आगे पीछे चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, so I hope you got it. Any doubt here? Anyone has? You can ask. तो क्या पता चलता है इसमें से कि हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता चला।
उनको शॉर्टेस्ट कितना है पता चला 911 एंगस्ट्रॉम. ओके एंड देन लार्जेस्ट वेवलेंथ कितना पता चला इज इक्वल टू 161 है ना 1216 एंगस्ट्रॉम. ओके लेकिन ये सीरीज का नाम क्या है? इस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज. ओके तो इसी तरह और भी कई सीरीज है जो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे. बामा सीरीज है, we have many other series, correct? So Castin series, bracket series, Humberry series, ऐसे अलग-अलग सीरीज. लेकिन इसको लिख लोगे फटाफट. लिख लो फटाफट. Okay, so we'll now end for the day. Right? I'll send you homework. और आज का पिछले बार का होमवर्क चाहिए मुझे रात तक किसी भी हाल में. तो धुलाई एक एक पकड़ के मारूंगा मैं. एक एक के घर पे आके मारूंगा सबको. ठीक है. Okay, so thank you very much. We'll end. If you have doubt, you can ask. Otherwise, you can... Can you explain spectrum again? Which spectrum? Atomic spectrum अच्छे से समझा नहीं. Means complete thing you are asking or from where you are asking? Yes, sir. Same here. From where you are asking? Sir, the main concept. Okay. Beginning from here, क्या? हाँ sir. Yes, sir. Okay, no problem. I'll explain it. Now, what you can do now? I'll share you the video. Okay. Now, again, I have one more lecture now at 4 o'clock only, lined up after this. Okay. So now I may not be able to explain, but surely you watch the video and later on we'll decide some time where I could explain. Okay. But you try to read from textbook and watch this video again. Okay. But the basic concept here was that energy is lost. See, simple चीज हो रहा है यहाँ पर. From lower energy level, electron goes from lower energy to higher energy.
and from higher energy it comes back down to its original position. In doing so, in coming back to its original position, what it does is that it gives out some energy in the form of wavelength. Okay, तो क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है बाहर एक वेवलेंथ के फॉर्म में. तो जैसे हमने देखा कि ये ना यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ आने के चक्कर में क्या कर रहा है, एनर्जी बाहर दे रहा है. किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में. ठीक है, ये समझा आपको, एक वेव के फॉर्म में दे दिया उसने. हाँ सर. अब वेव के फॉर्म में देते रहते कुछ एनर्जी भी तो है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लेकिन कुछ एनर्जी है उसका. करेक्ट. तो एनर्जी कैसे निकाला हमने, E2 माइनस E1. ई कहाँ से आया था, ई आया हमको आया था टोटल एनर्जी से. टोटल एनर्जी मतलब ई था अपना, तो E2 माइनस E1 कर दिया हमने. तो ये डेल्टा ई क्या बताता है, इन दोनों के बीच का एनर्जी. कैसे पता चला, हमने देखा हर एक शेल का एनर्जी लेवल देखा इस फॉर्मूला से. एवरी एनर्जी शेल का एनर्जी हमने गेट सीन फ्रॉम दिस फॉर्मूला. ओके, 10.2 आ गया. एंड नाउ दिस ही इज आस्किंग दैट कि वेवलेंथ क्या है. तो एनर्जी पता चल गया. तो एनर्जी का फॉर्मूला है hc by लैम्डा. इट वाज गिवन बाय प्लैंक. इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या निकाला, लैम्डा निकाला. मतलब उस जो भी वेव निकला बाहर उसका मैंने वेवलेंथ निकाल लिया. ठीक है, और वेवलेंथ निकालने के बाद क्या किया, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दी. सेम इक्वेशन डेल्टा ई में 2 की जगह मैंने क्या रखा, n2. मतलब n का वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ मैं, 3 4 5 6 2, और n1 मतलब 1 ही रहेगा, या फिर 2 3 एनी वैल्यू रखेंगे. सो स्टैंडर्डाइजेशन करके मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये आया, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू rz स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर. r क्या है, 13.6 बाय hc. ये स्टैंडर्ड मुझे आ गया वैल्यू. अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आ रहा है, तो क्या करना चाहिए उसको, यहाँ पर 2 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो. तो मुझे आ गया, वेवलेंथ निकाल रहा हूँ मैं अभी सब में. तो 2 से 1 आया तो वेवलेंथ कितना आया, 911 सॉरी 1216. 3 से 1 पे आ गया इलेक्ट्रॉन, तो वेवलेंथ कितना आया, वेवलेंथ कितना आया अपना, है ना, 1026 एंगस्ट्रॉम. करेक्ट. 4 से 1 पे आ गया तो कितना आ रहा है वेवलेंथ, कितना आ रहा है, 971. करेक्ट. और इन्फिनिटी से 1 तक आ रहा है तो कितना आ रहा है, 911. तो बस यही है इस कंसेप्ट में. ठीक है, स्टिल यू हैव डाउट, लेटर ऑन यू कैन क्लेरिफाई. ओके, बट बेसिक यू अंडरस्टूड क्या, नहीं हाँ यस सर. है ना, ये हो तो वही रहा है, इसमें एनर्जी लिया और दिया जा रहा है बस. तो बेसिक कंसेप्ट इज दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर इज दैट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल इट इज फॉलिंग डाउन टू लोअर एनर्जी लेवल, और ऊपर से नीचे आने के चक्कर में क्या कर रहा है वो एनर्जी लूज कर रहा है. लूज कर रहा है. किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में. और जो वेव के फॉर्म में कर रहा है उसका कुछ वेवलेंथ है, और वही वेवलेंथ यहाँ पर दिया गया है. ओके, कैसे निकालना है वही हम देख. ठीक है, सो अगेन रीड एंड if you have doubt then we'll again discuss it. Okay. ओके सर. Okay, sir. Thank you. Okay, so thank you very much. I have one more lecture now. So Okay, thank you, sir. Bye. okay, yeah. Bye. सर.